the live stream. Welcome back to another live stream on this cricket channel brought to you as always by Dafa News. मैं हूं जेमी ऑल्टर। दोस्तों इंडिया T20 सीरीज जीत चुकी है यानी कि एक और घर पर बायलैटरल सीरीज ट्रॉफी शाइनी ट्रॉफी बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स में रखी जाएगी जब तीसरा और आखिरी वनडे मैच खत्म हो जाएगा। इसमें नई बात नहीं है। इंडिया और बॉसेस एट होम, दिस टीम इज डोमिनेटेड कंसिस्टेंटली pretty much every single team that has come to play bilateral T20 cricket and ODI cricket more or less for the past, I don't know, several years. और इसीलिए टीम नंबर वन रैंक T20I टीम है और टीम नंबर वन रैंक ODI टीम है। लेकिन अगर हम इस सीरीज से एक प्लेयर का नाम ले सकते हैं जो पिछले दो मैचेस में अपनी बैटिंग द्वारा और कहीं ना कहीं शायद कुछ लोग उनके बॉलिंग को देखकर भी प्रभावित हुए हैं, तो वो है शिवम दुबे। 30 साल के लंबे चौड़े हट्टे कट्टे मुंबई के ऑलराउंडर शिवम दुबे। ना पहली बार नहीं है जब शिवम दुबे इंडिया के लिए खेल रहे हैं T20 क्रिकेट। काफी काफी मैचेस खेल चुके हैं, उनके हिसाब से 20 के तकरीबन मैच हो चुके हैं। ही मेड हिज डेब्यू इन 2019 एंड प्लेड, पर 2020 के बाद से दोस्तों पिछले साल के आयरलैंड सीरीज तक शिवम दुबे को रिकॉल नहीं किया गया। क्यों शिवम दुबे को 30 साल के शिवम दुबे को पिछले साल वापस रिकॉल किया T20I स्क्वाड में? इसके दो कारण हैं। एक, आयरलैंड सीरीज में या फिर एशियन गेम्स में ज्यादातर 7-8 लोग फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स हमारे भारतीय टीम के वो वहां पे मौजूद नहीं थे। फैक्टर नंबर वन। फैक्टर नंबर टू वाज पिछले साल के आईपीएल में डिफेंडिंग चैंपियंस चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो टाइटल जीतने वाली टीम थी, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करके कुछ 400 से अधिक शिवम दुबे ने रन बनाए, प्राइमरली बैटिंग एट नंबर 4 समटाइम नंबर 5, और इनका स्ट्राइक रेट कुछ 152 के आसपास था। I'm not getting exactly what it was, but spin के against he had a strike rate of about 175 if I'm not mistaken, and he hit 22 sixes, the most by any player last season, वो भी स्पिन के अगेंस्ट। तो इन दोनों फैक्टर्स के कारण शिवम दुबे वापस आए थे इंडिया के T20I स्क्वाड में। आयरलैंड में एक ही मौका मिला, कुछ नहीं किया, 22 रन बनाए, एशियन गेम्स गए, 2 मैच खेले, कुछ ज्यादा नहीं किया। फिर वो जो 5 मैच की श्रृंखला थी ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप के बाद, उस स्क्वाड में थे दुबे लेकिन उनको मौका नहीं मिला। उसके बाद टीम साउथ अफ्रीका गई, ही वाज नॉट देयर, but then he was recalled once again for these 3 matches, and in these two matches though so far he's got 60 of 40 balls and 63 not out of 32 balls, यानी कि 2 बार दुबे ने बैटिंग की, दोनों बार विस्फोटक अर्धशतक बनाए हैं, छक्कों की बौछार, प्लेयर द मैच इन द फर्स्ट इनिंग्स, द फर्स्ट मैच। और इनकी ऐसी बैटिंग को देखकर यानी कि 2 बार 60 नॉट आउट, 63 नॉट आउट, स्ट्राइक रेट अराउंड 200, बड़े बड़े लंबे छक्के। मेरा मानना है कि इंडिया के अंदर कोई भी उनसे बड़ा छक्का नहीं लगा सकता। ही इज दैट ब्रूटल ऑफ अ प्लेयर, खासकर स्पिन के अगेंस्ट। लेकिन क्या 2 मैच के बेसिस पर, और यहां पर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कल मेरे सोशल मीडिया स्ट्रीम पर ये सवाल आ गया। कल मैं क्रिकेट नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम पे बैठा था और ये सवाल वहां पे आया, और जैसे ही कल दूसरे मैच के बाद मैं उस लाइव स्ट्रीम पे बैठा तो मेरे एक दोस्त हैं रोहन, जो क्रिकेट खेलते मेरे साथ, उनका जवाब आया कि भाई क्या दुबे का फॉर्म को लेकर उनकी जगह बनती है और क्या हार्दिक की जगह बनती है? Now, unfortunately, because he at one point was, or is, I would say, not as potent as he was before, Dube was a seam bowling all-rounder with his batting here and the bowling here. तो ऑब्वियस बात है कि उनका नाम जोड़ा जाता है हार्दिक पांड्या से। वही हार्दिक पांड्या कि जब वो फिट होते हैं, जब वो फुल फोर्स में होते हैं, तो उनसे बढ़िया ऑलराउंडर शायद हमारे इस देश में नहीं है। He's a quality bowler, can bowl 140, gun fielder, and also hits the ball very, very well. And he's been a good finisher, a finisher both of innings and a finisher both of matches. तो जब हार्दिक पांड्या नहीं है और शिवम दुबे आके 2 मैच में बॉलिंग कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद, चलिए रन खाए दूसरे मैच में, he's bowled what 5 overs in 2 matches for about 45-46 runs, picked up 2 wickets. That coupled with what he's doing, amazing things with the bat, has now led people to ask me directly, indirectly, on WhatsApp, on social media, on various live streams, कि क्या बीसीसीआई सिलेक्टर्स को शिवम दुबे का नाम के बारे में सोचना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के लिए? My direct answer is they should think about him, but I don't think he's going to go. क्योंकि देखिए, ऑल सेड डन शिवम दुबे ने 2 पाटा विकेट्स पर, मोहाली का विकेट पाटा है, और कल का जो मैच था, इंदौर इज वन ऑफ द फ्लैटेस्ट ट्रैक्स, स्मॉल, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्राउंड इन इंडिया विथ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बाउंड्रीज, और ऊपर से अफगानिस्तान की बॉलिंग कुछ खास नहीं थी। बेशक शिवम दुबे हैज मेड हेड्स टर्न, हिज हिटिंग इज आउटस्टैंडिंग,
His sixes were sixes on any ground, not just the small ground of the whole Kerr Stadium. But two matches where his batting has overshone pretty much everybody else, and five average overs. I think his first wicket was due to smart field placing, and the second one was due to a clever slower ball, but a very bad shot. So let's detach the seam bowling part of Shivam Dube's skills, and let's say कि अगर क्योंकि देखिए हार्दिक पांड्या जरूर वापस आएंगे वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक पांड्या के मुकाबले में दुबई नहीं है आप लोग भी जानते हैं और ही इज नेवर गोना बी एज गुड और एज पोटेंट अ bowler as Hardik Pandya. Maybe the selectors could consider Dube depending on what he does in the third and final T20I, as well as his batting form in the first half of the IPL for CSK. अगर तीसरे अफगानिस्तान T20I में फिर से दुबे चलते हैं, अगर आईपीएल में वो चलते हैं, तो मे बी द सिलेक्टर्स कैन इंडीड लुक एट पर मैं ये मानता हूं कि उन्हें आप एक ऑलराउंडर के बेसिस पर मत गिनिए T20 वर्ल्ड कप प्लान्स में. आप उन्हें प्योरली एज अ बैट्समैन मान के देखिए क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था उनसे बड़े छक्के मेरे हिसाब से कोई नहीं मारता है जिस तेजी से वो मारते हैं जिस गति से वो मारते हैं जिस जोश से वो मारते हैं and he's a left-hander he could potentially be an asset in the West Indies but the point is who are you going to drop to accommodate him nobody रोहित और कोहली के आने से दो लोग की जगह हट गई है जायसवाल ओपन करेंगे क्योंकि वो गिल से तेज मारते हैं और वो लेफ्ट हैंडर है स्काई वापस आएंगे तो यानी कि आपका एक दो तीन चार फिक्स्ड है बाकी पांच और छह के लिए आपको हार्दिक पांड्या की जगह बनाने पड़ेगी और आपको एक विकेट कीपर की जगह बनाने पड़ेगी उसके बाद सात आठ पे आपको जडेजा अक्षर जो भी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आपको खिलाना है वो आप खिला सकते हैं तो स्टार्टिंग में ही हमें मालूम है कि दुबे एज अ बैट्समैन और एज अ ऑलराउंडर इंडिया के स्टार्टिंग लेवल में नहीं आ सकते क्या वो स्क्वाड में आ सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए हाँ अगर जो जैसे कि मैंने कहा था तीसरे T20 में वो एक बार फिर से जोरदार परफॉर्मेंस है और उसके बाद आईपीएल में जाके वो ताबड़तोड़ बैटिंग करे जैसे कि उन्होंने पिछले साल में किया था आई थिंक इफ इंडीड the selectors and the management see something in Dube which wants them to bring him back into the fold for the T20 World Cup, then I think it should be purely based on his batting, not bowling, because he's not a reliable, not a potent wicket taker. उनके आंकड़े बताते हैं ये और डोमेस्टिक में थोड़े बहुत bowling करते हैं आईपीएल में तो बिल्कुल बोरिंग नहीं करते because the impact player rule, as we've discussed on many past live shows, has actually impacted all rounders in the sense that they're not doing their core skill that is bowling. तो अगर दुबे यहाँ पे आपकी राय जानना चाहूंगा अगर दुबे वर्ल्ड कप में आएंगे आई थिंक इट्स अ लॉन्ग शॉट अ वेरी स्लिम शॉट आई थिंक इट शुड बी बेस्ड प्योरली ऑन हिज बैटिंग capabilities. That's what I had to say. Now, let's get into what you have to say. You, the viewer of the show, have to say on the matter of Shivam Dube. चले अच्छा कंप्यूटर मेरा थोड़ा फ्रीज हो चुका है कहीं जाएगा मत seems to have gotten stuck. The chat is loading. बाकी आप लोग बताइए क्या हालचाल कहाँ से जुड़े हैं आप लोग कौन कौन घर में है कौन ऑफिस में है कौन ट्रैवल कर रहा है आहा आ गए सवाल आ गया अरे एक सेकंड सवाल आ गया था एंड द स्ट्रीम इज बैक बट got the comments Manish saying good afternoon it'll be interesting to see the World Cup team bilkul Chaitanya Sai saying hello Jamie good afternoon any comments on Dube the bowler I've already shared that in my intro CFC Blues is saying IFPL will be important yes correct Dahi Balla adding we've got your name Dinesh I'll try to remember that Dinesh Dahi and Dinesh हमारे जिगर के छल्ले एक समय पर जी हाँ बिल्कुल थैंक यू What do you think? Should Shivam Dube change his name to Shivam Dubai because he was hitting six the side of Burj Khalifa yesterday? Good one, good one. Like I said, massive fan of his six hitting. Shikhar Singh keh rahe how good Hardik is doesn't matter if he ain't gonna play. Indian team needs fast bowling all order. Dube might not be a great bowler but has good enough for a couple of overs. He's good enough for 2 overs. लेकिन अगर आप Dube की bowling दुबे द बॉलर को फैक्टर इन कर रहे हो अपने वर्ल्ड कप प्लान्स में फिर तो भाई आप वर्ल्ड कप भूल जाओ शिवम दुबे can be a backup but if you're actually looking to him to bowl 1 over 2 overs at a world cup फिर भैया भूल जाओ उनको एज अ बैट्समैन आप देख सकते हैं लेकिन मेरा सवाल वही है इनको खिलाने के लिए आप किसको ड्रॉप करोगे नो ऑब्वियस आंसर टू माय माइंड स्पोर्ट्स फैन इज बैक वेलकम बैक माय फ्रेंड Usually, you would want to add a many multi-utility players like Dube while crafting a T20I squad. But we know the selectors do the opposite and add more one-dimensional players as tournament approaches. सही observation है आपकी, सही बात है. Nihar is asking what's wrong with Rohit. He looks out of touch. I mean,
two innings. One, he was run out by Gill, and the second lasted one ball where he played a shit shot. So, not really going to judge Rohit Sharma on one awful shot because the first match he he played a good shot. It was his call. The single was on, but unfortunately, Gill was ball watching. So, if you want to judge Rohit, you can judge him on that yesterday's dismissal. Horrible shot, shit shot, like I said, but not enough to say that he's out of touch. दही बल्ला पूछ रहे हैं या दिनेश पूछ रहे हैं how would you rate Shivam as a player under pressure? He's handled the pressure really well for CSK, and the team went on to win the title. So I think if you can handle CSK level IPL knockout pressure, you should be able to handle it at the international T20I stage. So no issue for me there. Meanwhile, Hardik is a proven commodity and has gotten us out of crunch situations. बिल्कुल हार्दिक पांड्या का तो मैं कह चुका हूँ. मैं फैन हूँ उनका उनकी बैटिंग का. He after Virat Kohli again, it's a very distant second. He's been one of India's best finisher. और जब मैं फिनिशर शब्द का उपयोग करता हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ केवल मैचेस फिनिश की नहीं कर रहा हूँ, मैं इनिंग्स फिनिश करने की बात भी करता हूँ. आप देखिए T20 में बहुत बहुत इनिंग जाने के जब इंडिया पहली बैटिंग करती है और दूसरा इनिंग शुरू नहीं हुआ तो हार्दिक पांड्या ने बहुत बार इनिंग्स बेहतरीन विस्फोटक अंदाज से खत्म किया है. तो yes, he's incredibly frustrating to watch because he's often getting injured. लगता है कि साल के 6 महीने वो बाहर होते हैं रिहैब में या फिर कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे बैठ के रील्स बनाते होंगे. But when Hardik Pandya clicks, when he's doing what he's supposed to do, उनके मुकाबले में मेरे हिसाब से कोई ऑलराउंडर नहीं है. SS98 is once again always reliably back with his best India 11 for the World Cup. I think, did you share it yesterday? I think you did. You had Kohli, Jaiswal, Sky. अच्छा, you've added Dube now. I think आपके पिछले 11 में Dube नहीं थे. Rinku, Hardik, Jitesh, Akshar, Kuldeep, Bumrah, Arshdeep. Yeah, pretty good one. I think Kuldeep in your mind will trump Bishnoi. Fair enough. I think Bishnoi. I would go for Bishnoi, but Baki, yeah, that's a pretty good 11. But Rohit, Kohli opening वो नहीं होगा दोस्तों. I think मैंने कल भी कहा था वो नहीं होगा. भास्कर पूछ रहे हैं aren't West Indies wickets very different? If this World Cup were happening in the month of September, you'd get much drier, lower wickets. But on the basis of, and I know somebody brought to my attention the recent England West Indies T20 series where 200 was broached. But I came back with the stats in 125 innings T20I innings in the West Indies. कुछ 8-9 बार ये 200 पहुंच चुका है. So overall, I would expect 175, 180 to be a par score. It's sort of the middle of the West Indies domestic season, so you're not going to get typically slow and low wickets. ऊपर से ICC event है, तो कौन से wickets मिलेंगे? No one can accurately say, but there's definitely going to be spin. You're going to see variable bounce. You're going to see spinners, someone like an Akil Hussain. You're going to see bowlers like him starting in the power play. Because the West Indies, they're very, very infuriating to watch because they're very inconsistent, but they're very attacking and aggressive in their ways. So I would expect players like Akshay Patel to have a big say at the T20 World Cup on the West Indies pitches, not the North American pitches, because those are all drop-in pitches, barring Florida. Hardik gets over. Not sure what that question or that statement is supposed to mean. If you can elaborate, Surya, I will try and answer. Hardik gets over. Daibala Arik saying, even though his bowling isn't that great, that slow and low bowl out delivery from Dube was awesome. It was a good ball, yes. ABCD saying, hi, Jamie. Not sure if I can judge Shivam's performance so quickly, but I think he's the closest replacement for Hardik and shows our lack of preparation on all rounders. Unfortunately, there is no second option to Hardik Pandya. Venkatesh Iyer ka naam aa chuka hai. Um, Dube has bowled a bit, but they're so far behind Pandya when it comes to bowlers. तो ना ही मैं दुबे को एक proper viable all-rounder मानता हूँ, ना ही वेंकटेश अय्यर को. Good to see that Venkatesh Iyer is starting to bowl now against in domestic cricket. The impact player rule has reduced his bowling to zero in the IPL. It's reduced Dube's bowling to zero in the IPL. But yeah, it's not a very good situation. अगर हार्दिक पांड्या के बाद एक भी वायबल T20I सीम बॉलिंग ऑलराउंडर नजर नहीं आ रहा है. शिखर सिंह कह रहे हैं जय भाई पांड्या को फिट करना है तो एक बैकअप पीछे लगाना पड़ेगा. वर्ल्ड कप तो वैसे भी नहीं जीत रहे 10 साल से. सही बात है. आई एग्री विथ यू. प्रभात, हाउ आर यू? हेलो फ्रॉम बैंगलोर. हाउ आर यू?
We can realistically only play two of Rinku, Dube, and Pandya. Big dilemma whom to drop your views. Pramat, I think you have not caught the past live stream that I've been talking about for a month or so. Um, the moment that Rohit Sharma and Virat Kohli came back, two people had to go out. That meant that Gill is gone and Tilak Verma is gone. Okay, right now Rinku's playing, but when Hardik Pandya comes back, when KL Rahul comes back, when Suryakumar Yadav comes back, even Rinku Singh is not going to get a chance in India's starting 11 at the T20 World Cup. So someone like Dube, who's not really part of their plans right now, he's so far behind. Someone like Rinku Singh, my favorite young Indian batsman going around in T20 cricket, he's got exceptional numbers. He's played a handful of T20Is in the last 6 months, and he's been brilliant. But that Rinku Singh, who's such a brilliant finisher, he's not going to start at the T20I World Cup because Rohit Sharma, Virat Kohli, Hardik Pandya, Suryakumar Yadav, and potentially a keeper. It's not going to be Sanju Samson. It's not going to be Jitesh Sharma, your first pick player. It's most likely going to be Sanju Samson or it's going to be someone like Ishan Kishan. तो जब पांच जगह आपको खाली करने पड़ेगी, unfortunately, even a consistent performer like Rinku Singh will not start at the World Cup. He's going to be carrying drinks at the T20 World Cup. So Dube is so far behind him. Surya Vikram Singh is now adding his comment correctly. Hardik gets edge over Shubham because of bowling. Bilkul. That's what I said at the start of the show. Haven't seen Hardik ever bowl 19th over. Did you agree with Dube being handed 19th over yesterday? Not at all. If Dube bowls, he should bowl, the 8th and 10th or 9th and 11th. He cannot be bowling at the death. We saw, look at his bowling figures even before this series. In 19 prior T20Is, before this series, he'd only bowled 4 over once. He bowled 1 over 6 times and 2 over 6 times. And even since he's come back in the Ireland series, his bowling was very average in Ireland. His bowling was very average at the Asian Games, जहाँ पे सामने की कोई ढंग की team नहीं थी. He's always going to be a bowler who will tend to leak runs. So I was very surprised that Rohit Sharma gave him that over. If you are using Shivam Dube as part of your regular T20I bowling plans, as in a fifth bowler or sixth bowler, you're not going to win very much, unfortunately. Abhishek Agarwal saying, as a fan, I would love if they played Jaiswal and Rinku in first playing 11. Bilkul, my friend. I think Sky ke baad, the first two names who would make my T20I team would be Rinku Singh and Jaiswal. अगर हम batting के बारे में बात कर रहे हैं. Shreyansh कह रहे हैं Rohit and VK should retire from this format. Like I've been saying over the last year, I thought they had what I'd heard from people in the know was that they had definitely moved on, but something changed. Maybe after not winning the one day World Cup, both Rohit and Virat said, you know what, bhai, hame ek aur chance do to win an IC trophy. Maybe the selectors were swayed by their form. They were both individually brilliant with the bat in very different, very specific roles at the World Cup. Maybe that outstanding run of white ball form prompted the selectors to come back. Maybe because, like I said before, the three men who've captained India in the 14 months that Rohit Sharma was not playing T20Is, यानी कि Hardik Pandya, सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ वो तीनों injured थे इस बीच. Maybe that's why as a captaincy option the selectors went back to Rohit, and when you're calling back Rohit, how can you leave out Virat Kohli? So these are the three issues I've been dwelling upon when it comes to these two players in the last few weeks. Manish keh rahe Hardik should play only T20s, probably only way for him to survive. Correct. That's a very valid point. Shreyansh Kerry, yesterday young players showed why India won 2007 World Cup. Bilkul, the same comment we discussed on this show after the first match as well, and it's something that I've been saying for 3-4 years now. The T20 game is a young man's game. The more players you have over the age of 30, 32, the less your chances of winning T20 World Cups happen. अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, दहीबल्ला addict aka Dinesh पूछ रहे हैं, how should we be judging these victories? Don't. Can't tell if players are doing well or Afghanistan side is terrible without Rashid. Like I said, my friend Dinesh, I don't think you were a part of these live streams after November 19th, but I said any bilateral white ball series that India plays after that horrible, abysmal, shocking one day World Cup final, मेरे हिसाब से they're all inconsequential for two reasons. 10-11 साल हो गए 11 साल हो गए कि कोई भी इंडियन टीम आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई. आप नंबर वन, आप बायलैटरल्स पे आप घर पे शेर हो.
क्या फायदा इन सारे बायलैटरल्स, कभी वेस्ट इंडीज आती है उनको आप पेल देते हो 3-0, श्रीलंका को आप पेल देते हो 3-0, न्यूजीलैंड को आप पेल देते हो 3-0, बांग्लादेश को आप पेल देते हो, हालांकि आप हारे हो बांग्लादेश में, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जो भी टीम आती है आप उनको व्हाइट बॉल में पेल देते हो, फिर आप टूर्नामेंट नहीं जीत पाते हो. That was one reason why I termed, in the aftermath of the One Day World Cup final, all these five-match series against Australia, three in South Africa, three in West Indies, I termed them all inconsequential. Inconsequential for the second reason is कि रिंकू, तिलक, जायसवाल जो भी हो, इनके परफॉर्मेंसेस से क्या फायदा, बिश्नोई के परफॉर्मेंसेस से क्या फायदा, अक्षर पटेल के परफॉर्मेंसेस से क्या फायदा, जब एक दिन 14 महीने बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा वापस आके खेलते हैं T20 मैच और आपको इन प्लेयर्स को ड्रॉप करना पड़ेगा. स्काई, पांड्या, केएल राहुल, जब ये लोग आएंगे तो ये जो युवा प्लेयर्स हैं जो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, दे आर नथिंग मोर देन जस्ट प्लेस होल्डर्स, लाइक माय फ्रेंड चेतन नरूला कॉल्स देम ऑन द अदर शो. दे आर जस्ट प्लेस होल्डर्स. भैया कोई आने वाला है, तब तक आप इनकी जगह पकड़ो, आप इनकी कुर्सी गर्म करो. So unfortunately, all these players do end up being just placeholders when 5 or 6 or maybe 7 more experienced players come back. That's why I don't judge these performances at all. That's why I'm saying, as good as Dube has been, he's a placeholder. These are very small flat tracks. तीसरा मैच बैंगलोर पे है. आप अगर 3 मैच की सीरीज मोहाली, पाटा, इंदौर, पाटा, छोटा ग्राउंड और बैंगलोर, पाटा, छोटा ग्राउंड, अगर आप पूरा सीरीज इन 3 ग्राउंड्स पे खेल रहे हो, हैट्स ऑफ टू दुबे फॉर स्कोरिंग रन्स, but it's on very, very convenient batting tracks against a very poor bowling side. I'm saying judge these performances with caution. Pankhuri Verma Singh is asking, Jamie sir, Bharati is not fit and you have to pick one between Dube or Rinku. Who will you pick, sixth bowling option or specialist? Rinku bowling नहीं करते तो उनको छोड़ दो. I will anyways. I will any day go for Rinku. If you're giving me the option between Rinku and Dube, I'll take Rinku definitely. He's a finisher. Surya Vikram Singh saying, do you think KL Rahul will return to T20 squad World Cup? Absolutely, he will. Absolutely. I think so. I don't like it. I don't agree with it, but he will definitely. क्या रोहित शर्मा का वक्त T20 में खत्म हो चुका है? देखिए, एज अ बैट्समैन सुबोध, तो पिछले 7 साल से उनका T20 फॉर्म नहीं है. 7 साल से वो किसी भी आईपीएल सीजन में 450 से रन नहीं बना पाए, जो कि हम सब मानते हैं एक बेंचमार्क है. ऊपर से आप पिछले तीन तीन T20 वर्ल्ड कप्स देखिए, वहां पे भी रोहित शर्मा 200 रन भी नहीं बना पाए पिछले 3 T20 वर्ल्ड कप्स में. तो इनका खराब समय एज अ बैट्समैन तो 7 साल से चल रहा है, लेकिन उन 7 साल के बीच शायद 3 बार मुंबई इंडियंस आईपीएल जीत चुकी है, तो उस लिहाज से उनका स्टॉक जो है वो ऊपर रह चुका है. लेकिन रोहित शर्मा, मेरा ये मानना है कि 7 साल से अच्छी अच्छी बेहतरीन उस लेवल की बैटिंग T20 में नहीं कर चुके हैं. उसके बावजूद आजकल 2024 में वो टीम के कैप्टन है. 14 महीने पहले जब T20 वर्ल्ड कप से ये टीम बाहर गई, मैंने तब कहा था कि प्लीज आप रोहित शर्मा जैसे प्लेयर से आगे बढ़िए. बट 14 महीने बाद उनको वापस बुलाया गया एज कैप्टन, तो इनका वक्त कहीं से खत्म नहीं हो चुका है दोस्त. चैतन्य सिंह, टोटली एग्री विद यू, दुबे शुड बी सीन एज अ बैटर. यस. Abhinav is asking, how are you? Jai Hind. I'm fine. How are you? Nihar is saying, Dube can be same case like Venkatesh Iyer if he played blindly like 2021 T20. As a batsman, potentially, yes. Bhaskar is saying, Rinku should definitely play. I don't know who should be out, but Rinku should be in. I agree, my friend. Shikhar is saying the decision to pick Rinku in the 11 will decide Indian cricket team's World Cup destiny. He's that good in his roles. Absolutely सही कह रहे हो आप. Shreyansh said, कह रहे हैं the best ideal lineup for T20 team is average players and not specialists. There should be 9 batters and 9 bowlers in playing 11. मुश्किल है, बट हाँ लॉजिक है. डेडपूल इज सेइंग, पर रिंकू तो जरूरी है. बिल्कुल, रिंकू बहुत बहुत. रिंकू सूर्य कुमार यादव के बाद मेरे T20 टीम में सबसे पहले नाम रहेंगे. होपफुली केएल डजंट कम इन T20 स्क्वाड. आई एग्री, बट लगता है कि आएंगे दोस्त, आएंगे आएंगे आएंगे, जो मैं सुन रहा हूँ. शिखर सिंह कह रहे हैं, जय भाई 20 से हम सबको क्लैरिटी और प्लानिंग कब मिलेगी, या ये थाली की बैंगन ही रहेंगे? कोई क्लैरिटी, आप और मेरे बारे में बीसीए अगर सोचती ना तो अलग ही राह पे चल रही होगी. Dahiwala adding saying, why do I have a feeling that World Cup venues in North America will be terrible? Because they're small venues with drop-in pitches. That's why.
डेडपुल कह रहे हैं रोहित शर्मा का इंटेंट खेलना है अच्छा है पर बार बार नहीं चाहता, क्योंकि जब आप उस रिस्क से खेलोगे तो चलने के चांसेस नेचुरली कम है। तो पर एटलीस्ट कोई तो रिस्क ले रहा है, कोई तो इंटेंट दिखा रहा है। सो yesterday by the way I was very happy to see the way that विराट कोहली approached his innings। हाँ, इंदौर के होलकर स्टेडियम से बेहतर आपको जगह नहीं मिलेगी, वो भी पावर प्ले के अंदर, टू गो आउट एंड स्कोर। कल जो उनका 180 182 के आसपास स्ट्राइक रेट था, दैट इज द लीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट from Virat Kohli level player on one of the flattest, smallest grounds. But like I was arguing yesterday on the Cricket Next live show, विराट कोहली जैसे प्लेयर उनको जरूरत नहीं थी ऐसे खेलने की। He could have taken his time, he could have nudged the ball for a two here or there, he could have dabbed the ball. He chose to, from the first ball, step out and play shots. There was intent, there was desperation to succeed, क्योंकि उनके पीछे उनसे भी होनहार युवा खिलाड़ी हैं T20 में। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। चलिए 29 रन बनाए, बड़ा स्कोर नहीं था, but it was a kind of innings that showed कि विराट कोहली अपने आप को थोड़े बदलने की कोशिश कर रहे थे। So very pleased personally to see Virat Kohli batting that way. Castle is asking, sir, what's going on with Ishan Kishan? Discussed this many times in the last 10 days. Something happened in South Africa which has led the team management to view him with skepticism. He chose to come back from the test tour for personal reasons. Like I've been saying on the last 10 15 days, if someone for whatever reason has chosen to take a break for personal reasons, we cannot question that, we cannot criticize that. But now I'm hearing it's going to be some time before he is considered again. But मुझे पूरा यकीन है कि आईपीएल के पहले महीने में, यानी कि 7 मैचेस में, 6-7 मैचेस में, अगर अगर ईशान किशन 3-4 50 लगाते हैं मुंबई इंडियंस के लिए, तो वो जरूर वर्ल्ड कप स्कीम में आएंगे। डेडपूल सिंह, अक्षर का फॉर्म सही चल रहा है, उसको प्रेफर करना चाहिए, जडेजा को नहीं। भाई अक्षर पटेल, मैं कह रहा हूँ पिछले 2 साल में उनके आंकड़े देखिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और उस कल के पाटा विकेट में, कल के छोटे ग्राउंड में जहां पे 250 रन बन सकते हैं, उस बंदे ने 4 ओवर में मात्र 17 रन देकर 2 ओवर लिया है। अगर इंडिया के पास एक स्पिनर है जो पावर प्ले में काम कर सकता है वर्ल्ड कप में, तो वो अक्षर पटेल ही है। And Raj is back saying definitely yes, Dube should be in 15 considering Pandya playing just one format is prone to. Exactly. This is what, and Raj, this is what we've been discussing for the last 25 minutes. So yes, you're on the right track. Gajodhar Mr. कह रहे हैं, hello sir, hello Gajodhar. Predictions for Chinnaswamy match. I know India is not going to bat first because this team just does not believe in batting first. कोई बात नहीं। तो अगर रोहित शर्मा टॉस जीते हैं, वो फील्डिंग लेंगे, उस पिच पे अफगानिस्तान 180 तक बना सकती है और इंडिया फिर से 4-5 विकेट के नुकसान पर मैच जीत जाएगी। भास्कर इज सेइंग थोड़ा weird opinion. Kohli opens and Rohit out. Thoughts? No, it's not a weird opinion. On the Cricket Next stream, for the last 3-4 shows, we've discussed this regularly, and viewers like yourself have asked this question. And there is logic. I know it's not going to happen, but if Virat Kohli is opening in the IPL for the past 4 or 5 seasons, or I don't know how many seasons, and he's doing so well as an opener with Faf du Plessis, why wouldn't you want to open with him? I don't think it's going to happen. But if you want him to maximize the power play, it's a good option. But वही बात है, आप रोहित और कोहली में से एक को नहीं खिला सकते हैं, या तो दोनों नहीं खेलते हैं या दोनों खेलते हैं। विवेक पूछ रहे, who will be the spinners? Again, I've saying this for the last 2 months. The spinners are going to be Kuldeep Yadav, Ravi Bishnoi, Akshar Patel, and one more spin bowling all-rounder. या तो वो वॉशिंगटन सुंदर होंगे, या तो मोस्ट लाइकली रविंद्र जडेजा अचानक कुछ महीने बाद वापस आएंगे। Athar was saying, hey Jamie, will Dube make in T20 World Cup playing 11? No. I think, Athar, you've joined this stream a little late. We've discussed in the first 15-20 minutes of this live stream, when players like Tilak Verma, Shubman Gill, Jitesh Sharma, Rinku Singh are going to have to make way when big players come back, Dube is still so far behind. I guess you missed the first half an hour of this live stream, first 25 minutes of this live stream. In short, like I've been saying, and like people on this live stream have been agreeing with, if Shivam Dube has to come back into the World Cup squad, it'll have to be at the expense of another all-rounder. How he gets into the 11 is based on his batting. But जब रिंकू सिंह जैसे प्लेयर वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, तो दुबे तो दूर की बात है ना दोस्त।
आई थिंक नेक्स्ट टाइम रोहित रन बनाएगा। एक मैच है, फिर आईपीएल है। पिछले 7 साल से कभी भी 450 रन पार नहीं कर चुके हैं रोहित शर्मा। तो आई थिंक हिज फाइनल इंक्लूजन should be based on how he bats for Mumbai in the IPL. Killer Knight is saying, should Virat play like that night when you've Jaiswal, Shivam, and Rinku? Again, we can debate Virat Kohli's presence in India's T20I squad this year. But if he plays the way he did yesterday consistently, I'll go back to what I said about a year and a half ago, around the T20 World Cup disaster period. मैंने कहा था, well, this is just my view. T20 is not about big innings. It is, but if five of your players can bat at a strike rate of between 185 and 200 and get you 35 runs, 30-35 रन, अगर पांच खिलाड़ी 180 और 200 के बीच आपको 35 रन देंगे, आपके पास 200 है, आपके पास विनिंग टारगेट है, एक्स्ट्रास को जोड़कर और दो तीन यहां कैमियोस को जोड़कर. That's why I said yesterday Virat Kohli only got 29 runs, but it was the manner in which he got those 29 runs. I said, you know what? Here's someone who, despite being India's greatest T20I batsman in terms of runs, average, and strike rate, is trying to change his game to keep pace with the changing game. He's trying to hold down his spot with youngsters like Dube and Rinku and Jaiswal, who are hitting the ball farther and more frequently into the stands. Only 29 runs, but if five players from an Indian 11, बेशक जो भी हो वो लोग, अगर वो आपको 30-35 रन 180 और 200 की स्ट्राइक रेट पे दे सकते हैं, तो आपके पास मोर ऑफन देन नॉट एक विनिंग टोटल होगा स्कोर कार्ड पर. Rohit, so Kshitij is saying Rohit, Jaiswal, Kohli, Pandya, Dube, Rinku Jitesh, Akshar Mukesh, Bumrah, Bishnoi, Sundar. How's this lineup? It's a good lineup, but Sundar will not fit into this lineup only because you have only picked two pace bowlers, and Mukesh is not going to be one. Arshdeep, Bumrah, Shami slash Siraj will be India's preferred picks. Mukesh Kumar is one of those placeholder bowlers who will drop back. Jitesh Sharma is very good. I like his batting. बट जब तक बीसीसीआई ये नहीं कहती कि हम केएल राहुल से आगे बढ़ पाएंगे, आपको केएल राहुल के लिए एक जगह खाली करनी पड़ेगी. केएल राहुल स्लैश ईशान किशन. जितेश विल ऑलवेज बी योर बैकअप कीपर. रोहित जायसवाल विल ओपन. कोहली 3. इसमें आप स्काई का नाम भूल गए. हाउ कैन यू ड्रॉप इंडियाज बेस्ट T20I बैट्समैन? सो टू माई माइंड कोहली, रोहित, जायसवाल, यस. चार पे स्काई, 5 पे आपका कीपर. इट विल बी केएल राहुल स्लैश ईशान किशन. 6 पे पांड्या, नो रिंकू, नो दुबे, अक्षर, one more spinner and 3 pacers. That is going to be India's T20I World Cup lineup. So, yeah, I don't agree with exactly how it's going to pan out, but I know exactly how it will. Are you watching SA T20 League? Nope, not at all, my friend. Nihar is saying in World Cup, India should bat first against weak opposition like Ireland, USA, Canada to avoid chaos and knockout while batting first. बिल्कुल सही कह रहे हो. इसलिए मैं इतना हैरान था कि अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ एक अटरली इनकॉन्सिक्वेंशियल सीरीज में घर के पाटा विकेट्स पर ये लोग यहां भी चेस करना चाहते हैं. लॉजिक क्या है दोस्त? What's the future of Jitesh and T20 World Cup? Like I said, my friend Castle, I'm going to say it one more time. I think it's going to be a common theme here until India leave the T20 World Cup. It's very simple. The moment the selectors recall Rohit Sharma and Virat Kohli, two players had to automatically go out. One is Shubman Gill slash Gaikwad because they're the openers, and the second is Tilak Varma. यशस्वी जायसवाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए टीम में है क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड ओपनर है. शुभमन गिल जब रोहित शर्मा है ओपनिंग पे और विराट कोहली 3 पे है, शुभमन गिल की जगह नहीं बनती है, ऋतुराज गायकवाड की जगह नहीं बनती है. कोहली के आने से ऊपर से तिलक वर्मा ऑटोमेटिकली हैज टू गो आउट. Then you come to the two big players who are currently not here because of injury, Hardik Pandya and Shreyas Iyer. When these two players come back, players like Dube and Rinku Singh go out. So Verma, Jitesh, jab tak, look, I would take Jitesh Sharma and play him as my keeper in every match. But unfortunately, there's a more successful player called Ishan Kishan who right now is away on personal reasons. Once he comes back, Samson goes out. So then it'll be Jitesh Sharma and Ishan Kishan. लेकिन जब तक बीसीसीआई केएल राहुल के बारे में ये नहीं कहते कि हम उनसे आगे बढ़ चुके हैं या मई अप्रैल के एंड पे जब
वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होगा और उसमें केएल राहुल का नाम नहीं है, आप प्लीज, आई डोंट एग्री विथ इट, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी कि एक जगह, यानी कि केएल राहुल की जगह आपको खाली रखनी पड़ेगी। तो तिलक वर्मा is not going to the World Cup and Jitesh Sharma might go and should go as a second keeper, but जब तक ईशान किशन और केएल राहुल मिक्स में है, जितेश नहीं खेलेंगे। गजोदर कह रहे हैं यूएसए एंड कनाडा उर्फ इंडिया ईस्ट इंडिया एफ स्क्वाड्स। हाँ सही बात है। हरप्रीत कह रहे हैं जय भाई एनी अपडेट ऑन ईशान, आई एड्रेस दिस यस्टरडे, आई एड्रेस दिस यस्टरडे, और मैं आज भी कहूंगा फिलहाल ही हैज नॉट बीन पिक्ड because he still told the BCI that I'm not ready to come back yet, but also there are strong murmurs of something regarding indiscipline having gone down in South Africa. So regarding Ishan Kishan, I think he will definitely come into the mix for the T20 World Cup. But right now, due to him having some discipline issues and him also saying that I need a break to sort myself out, इन दो फैक्टर के कारण फिलहाल वो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए वो जरूर सिलेक्शन डिस्कशन में आएंगे। Thoughts on Dhruv Jurel? I did a whole show on this. Surprising, but hats off to him. Is Gill dropped from T20 or he might come back? No, he's part of the squad. He played the first match. He's not been dropped at all. He played the first match in Mohali. That's where he got Rohit Sharma run out. Na? खितेंद्र कह रहे हैं सर उमेश यादव इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में हो सकते थे, रणजी में अच्छा किया है, अभी 9 विकेट्स हॉल लिया है सौराष्ट्र के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल मैंने वो सुना। देखिए अभी स्क्वाड सिर्फ 2 मैच के लिए अनाउंस हो चुके हैं, 3 टेस्ट मैच बाकी है, आ सकते हैं, लेकिन इंडिया जिस किस्म की पिचेस देगी ना, स्लो एंड लो टर्निंग ट्रैक्स, उसमें 2 पेसर्स के आगे आपको किसी को खिलाने की जरूरत नहीं है, और जब तक मोहम्मद शामी है सीन में तो उमेश उनसे पीछे है। Sham is saying, I have low expectations from the T20 World Cup. Well, Sham, I guess you've not been watching my live streams for the last 2 months. I've urged you, मैंने विनती करी है आप सभी व्यूअर्स से कि प्लीज 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 इस टीम से सेमीफाइनल तक पहुंचने की उम्मीद ना रखें। अगर पहुंच पाए तब एंजॉय करिए, लेकिन प्लीज आप जितना भी आप लो अपने एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, उतना ही आप खुश रहेंगे T20 वर्ल्ड कप के टाइम। अच्छा, last comment, guys, because then I have to go and do something else. James, by your right assessment, India T20 World Cup squad announcement will be like the Avengers assembling scene. है ना दोस्त? होगा. Guys, thank you all. Love you. I've got to go now. Take care. Thanks for watching. Please do like, subscribe, share, all that good stuff to this cricket channel brought to you by Dafa News. You have a great Monday. मैं आपसे कल मिलूंगा. Take care. जय हिंद.